का नाम है हिज होलीनेस दानवीर गोस्वामी महाराज। तो ये दानवीर गोस्वामी महाराज ने बहुत रिसर्च किया इस विषय पे, वैदिक कॉस्मोलॉजी। और शिला प्रभुपाद का जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक वीडियो बनाया, वीडियो प्रेजेंटेशन इस वैदिक कॉस्मोलॉजी का। तो वो इंग्लिश में है और उसमें कुछ बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं वैदिक कॉस्मोलॉजी से संबंधित। तो हम वो वीडियो आपको दिखाएंगे और साथ साथ उसका मैं एक्सप्लेनेशन साइड बाय साइड में उसको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। तो अभी स्क्रीन शेयर, ये आप लोग बाद में भी देख सकते हैं अपने टाइम से। हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, उतना सब कुछ नहीं देखेंगे, जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको लेंगे। बाकी आप लोग बाद में अपने टाइम से आप पूरा देख सकते हैं जिसको देखना है। और Above our heads, adorned with shining stars, extending as far as the eye can see. One of the most appealing and mystifying of all sights. The beauty and the majesty of the universe have inspired awe and reverence in the best brains throughout history. There is a perfect brain behind all the natural physical laws. तो यहाँ आइंस्टाइन कह रहे हैं कि उन्होंने जो स्टडी किया है भौतिक जगत का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, उनका कंक्लूजन है कि ये पूरा फिजिक्स के लॉज के पीछे एक परफेक्ट ब्रेन है, एक परफेक्ट इंटेलिजेंस है। और यही हम देखते हैं भागवतम के प्रथम श्लोक में कहा गया है, अभिज्ञा स्वराट। तो ये पूरा जन्माद यस्य यथो अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट। तो ये पूरा जो सृष्टि है उसके पीछे अभिज्ञा का मतलब है परफेक्ट इंटेलिजेंस, परफेक्ट ज्ञाता, परफेक्ट नोर, सब कुछ जानने वाले व्यक्ति, अभिज्ञा और स्वराट और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एक व्यक्ति है। और वही यहाँ आइंस्टाइन भागवतम हो सकता है पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, किंतु उसने अपना रिसर्च के माध्यम से इसी कंक्लूजन पे यहाँ आइंस्टाइन आया। इस तरह से और भी कहीं साइंटिस्ट का यहाँ कोटेशन दिया गया है। The perfect brain behind all the natural physical laws. This most beautiful system of the sun, planets and comets could only proceed from the counsel and dominion of a powerful and intelligent being. तो
दानवीर महाराज ने एक वैदिक ज्ञान का प्रचार के लिए एक कॉलेज चालू किया है। इसका नाम है रूपानुगा वैदिक कॉलेज। कई सालों से चल रहा है। अमेरिका का कैंसस सिटी में ये कॉलेज है। ये क्या हुआ? Please describe the symptoms of this manifest world. What is its background? How is it created? ये भागवतम के शुरुआत में नारद मुनि ब्रह्मा जी से ये प्रश्न करते हैं कि ये जो अव्यक्त जगत है, व्यक्त मैनिफेस्ट वर्ल्ड मतलब जो व्यक्त हमको जो दिखता है, ये जो जगत के पीछे क्या है, अव्यक्त जो हमको दिखता नहीं है, ये हाउ इज इट क्रिएटेड, इसका सृष्टि कैसे हुआ, और ये हाउ इज इट कंजर्व, इसका पालन कैसे होता है, और किनके निर्देश के अनुसार ये सब कार्य चल रहा है। तो ये सृष्टि तत्व के विषय में नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया श्रीमद् भागवत में। तो ये उनका जो उसके जो उत्तर में जो ज्ञान प्राप्त है, उसी के आधार पे ये सब ये जो प्रेजेंटेशन बनाया गया है। How is it conserved? And under whose control is all this being done? Many millennia ago, an advanced civilization revealed the mystery of the origin and nature of the cosmos. The term Vedic refers to the civilization of ancient India. Angkor Wat, the world's largest temple complex, with walls nearly 1/2 mile on each side. एक प्राचीन मंदिर है जो अभी फंक्शनल नहीं है मंदिर के तरह से, वो फिर भी वो आर्किटेक्चरली, यहाँ ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया में एक टेम्पल है, विष्णु का मंदिर है इंडोनेशिया में। तो इसका नाम है एंकोर वाट। तो इसका जो डिजाइन है ये पूरा वैदिक कॉस्मोलॉजी के ऊपर आधारित। हमने पहले के सत्रों में देखा था कि कैसे जम्बूद्वीप के बीच में मेरु पर्वत है, और मेरु पर्वत के घेरे हुए कई सारे पर्वत हैं, और फिर ऐसे अलग अलग वर्ष है, 9 वर्ष है इत्यादि, और 7 द्वीप है, सप्तद्वीप इत्यादि। उसी के मॉडल में ये जो है मंदिर एंकोर वाट, वो भारत के बाहर है, इंडोनेशिया। पहले पूरा पृथ्वी भारत था, इसलिए भारत अभी जो हम भारत मानते हैं उससे बाहर भी कई जगहों में इस तरह के चीजें हम देख सकते हैं। तो इससे ये सब प्रमाण है कि जो वैदिक कॉस्मोलॉजी का ज्ञान है वो पूरे विश्व भर में, पृथ्वी भर में ये व्याप्त था उस समय। Was built between 1112 and 1150 AD in Cambodia. Astronomy and Vedic cosmology are inseparably entwined at Angkor Wat. The central towers represent Mount Meru, the cosmic axial mountain. The 5 internested rectangular outer walls and moats indicate chains of mountains enclosing the world and the cosmic oceans beyond. Science Journal noted that Angkor Wat had encoded precise calendrical, historical, and cosmological themes into the architectural plan for the temple. As many as 18 astronomical alignments have been identified within its walls. Rarely in history has any culture given rise to a structure that so elaborately and expansively incorporates its concept of the cosmos. Similar integration of cosmology and architecture is seen in the massive Indonesian temple at Borobudur. The temple was laid out using the ancient method of Vastu Purusha Mandala. This square diagram harmonizes architecture with the annual movements of the celestial realm. The temple was constructed sometime around 775 AD. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, also known as Srila Prabhupada,
author of 84 books on Vedic knowledge and founder of the International Society for Krishna Consciousness and the Bhaktivedanta Institute. He desired to erect the world's largest planetarium depicting Vedic cosmology through modern technology. He hoped that this gigantic virtual 3D animated model would give the contemporary world access to the Vedic cosmos. श्रील प्रभुपाद का भी इच्छा था कि ये जो वैदिक कॉस्मोलॉजी का ज्ञान है, ये क्योंकि भागवत का भाग है, तो उसका प्रचार हमारे सभी मंदिरों में होना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद का इच्छा था। तो उसका जो प्रमाण है यहाँ पे दानवीर महाराज दे रहे हैं। और एक लेटर उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने लिखा था। अपने एक शिष्य थे जो पहले केमिस्ट्री में पीएचडी थे, बाद में सन्यासी हुए, हिज होलीनेस स्वरूप दामोदर महाराज, उनको एक लेटर लिखा था इसके विषय में। तो उस लेटर के आधार पे उसमें जो उन्होंने व्यक्त किया अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, जो टीम है कॉस्मोलॉजी, वैदिक कॉस्मोलॉजी का टीम, वो इसमें बहुत सारा रिसर्च किया और श्रील प्रभुपाद की इच्छा को पूरा करने के लिए एक वर्किंग मॉडल, पूरा यूनिवर्स का एक वर्किंग मॉडल के ऊपर कार्य चल रहा है। वो मायापुर का वैदिक प्लानेटेरियम की Vedic planetarium. We shall show the Vedic conception of planetary system within this material world and above the material world. Vishwanandana Swami, a prominent scholar of Vedic cosmology in the line of Shripad Madhvacharya, feels that the planetarium will expand the horizons of modern cosmological knowledge. We have a lot of information about this universe in our Vedic and Puranic scriptures. So certainly a person who is interested in exploration, he would get some material for exploration. The planetarium had many different exhibits, so you wanted some exhibits that would show, would create this doubt in science that they don't have the proper explanation, and that the Bhagavatam has a better. तो यहाँ पे हिज होलीनेस श्रील जयपताका स्वामी महाराज ये वैदिक प्लानेटेरियम के पीछे जो उद्देश्य है उसको बता रहे हैं कि आजकल जो एक्सप्लेनेशन इस सृष्टि का लाइफलेस एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सो कॉल्ड साइंटिस्ट, तथाकथित जो वैज्ञानिक, वो वास्तव में व्यक्ति के जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर सकते। उसमें कई सारे भूल धारणाएं हैं, कई सारे कमियां हैं जिसको वो लोग सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या कुछ मनगढ़ंत ढंग से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो भागवतम का जो एक्सप्लेनेशन है ये सृष्टि का, वो परफेक्ट है और ये अज्ञान के ऊपर नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान के ऊपर आधारित। जो साइंटिस्ट का तथाकथित एक्सप्लेनेशन है वो अज्ञान के ऊपर आधारित। तो यहाँ ये जो प्लानेटेरियम बनेगा मायापुर में, तो उसका उद्देश्य यही है कि भागवतम का जो सृष्टि तत्व है उसको दर्शाया। In the temple, and that it would show the Vedic cosmology, and I think later on he said that even if the scientists don't accept it, we don't care. We just show what's in the Bhagavatam. We don't care whether people accept it or not, but we should just show it. In a letter to Bhakti Swarup Damodar Swami, Srila Prabhupada delineated 4 phenomena to be explained in the planetarium. Explain the passing seasons, the eclipses and the phases of the moon, and the passing of day, night, etc. Then it will be a very powerful propaganda. The literature of that period contains a wealth of cosmological knowledge encoded in Sanskrit,
arguably the world's oldest language. This knowledge has the potential to enrich our understanding of the cosmos we live in. A fundamental principle of Vedic cosmology is the existence of a dual reality, material and non-material. Here we see the non-material sky filled with innumerable planets of permanent stature. Among these, the topmost planet, Goloka, is shaped like a lotus flower, and it is here that the super-intelligent designer of the cosmos, Sri Krishna, resides with his associates. Although knowledge of the non-material realm remains beyond ordinary perception, the Vedic knowledge of the material cosmos has been recognized as extraordinary by many eminent Western thinkers. As in Hindu mythology, it is a continual dance of creation and destruction involving the whole cosmos, the basis of all existence and of all natural phenomena. Long before it became a scientific aspiration to estimate the age of the earth, many elaborate systems of the world chronology had been devised by the sages of antiquity. The most remarkable of these occult timescales is that of the ancient Hindus. Indian cosmologists, the first to estimate the age of the earth at more than 4 billion years, they came closest to the modern ideas of atomism, quantum physics. To the philosophers of India, however, relativity is no new discovery, just as the concept of light years is no matter for astonishment to people used to thinking of time in millions of kalpas. A kalpa is about 4,320,000 years. The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. Thus, the Vedic literatures answer the question whether the cosmos always existed or it had a beginning. The temporal arena of repeated universal creations and destructions exists in a corner of the non-material sky. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. The only religion in which the timescales correspond, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma. 8.64 billion years long, longer than the age of the Earth or the Sun, and about half the time since the Big Bang. And there are much longer time scales still. The material universe works on the principle of relative time. As such, a day of Brahma equals 8.64 billion years by earthly calculation. Since Brahma has passed half of his lifetime thus far, the age of our universe turns out to be approximately 100. तो यहाँ पे हम जो वैदिक टाइम का जो विभाजन है वो हम देख सकते हैं। तो पूरा जो ब्रह्मांड का आयु है हमने देखा, ब्रह्मा जी का जो जन्म से लेके उनका अंतिम मृत्यु तक का जो लाइफ ड्यूरेशन है, वो ये पूरा ब्रह्मांड का लाइफ ड्यूरेशन है। वो उसका संख्या आपको कहीं और नहीं मिलेगा। साइंटिस्ट लोगों का भी कुछ संख्या उन्होंने दिया है, किंतु वो बहुत छोटा है। ये पूरा संख्या है ये ब्रह्मांड का लाइफ स्पैन का।
वो हमारे शास्त्रों में प्राप्त है, भगवत गीता, भागवत इत्यादि। तो 311 ट्रिलियन ईयर्स, 4 बिलियन ईयर्स, 40 बिलियन ईयर्स, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, या कल्प में बोलेंगे, एक कल्प होता है ब्रह्मा जी का दिन रात मिला के एक कल्प होता है, 24 घंटा ब्रह्मा जी। तो 36,000 कल्प ये जो है पूरा ब्रह्मांड का आयु है। और एक कल्प कितना है ये यहाँ पे आता है, इसका है 4.32 बिलियन ईयर्स, ये एक कल्प है। उस कल्प में 14 मनवंतर आते हैं और 15 युग संध्या, मनवंतर के बीच में संध्या ये आता है। तो फिर एक मनवंतर है 71 दिव्य युग। दिव्य युग होता है 4 युग, सत्य द्वापर त्रेता कली सब मिला के एक दिव्य युग होता है। वैसे 71 जो दिव्य युग है, एक मनवंतर उसको कहते हैं। उसमें एक मनु जो है उनका आयु होता है, अवधि होता है, वो राज करते हैं इस समय अवधि के ऊपर मनु होते हैं। अभी के हमारे मनु का नाम है वैवस्वत मनु, वो विवस्वान के लड़के हैं। भगवत गीता में उनका उल्लेख आता है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम्। भगवान कहते हैं मैंने ये भगवत गीता का ज्ञान पहले विवस्वान को दिया, फिर विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। तो वो अभी हमारे मनु है, अभी के मनु, वो वैवस्वत मनु। तो ये अवधि है 51 जो है दिव्य युग, और एक दिव्य युग 4.3 मिलियन ईयर्स है, और 4 युग जो है मिला के। तो इस तरह से हमारे टाइम स्केल से वहां पूरा ब्रह्मांड के टाइम स्केल तक उसको उठाया जाता है। और इससे भी छोटे भी बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, एटॉमिक टाइम से लेके यूनिवर्सल टाइम तक सब कुछ शास्त्र में बताया गया है। तो बहुत ही एडवांस्ड साइंटिफिक नॉलेज था पहले के जो ऋषि मुनियों के पास। तो ऐसे नहीं है कि अभी हम बहुत एडवांस हुए, नहीं, इससे भी बहुत आगे पहले के लोग थे। तो वही बहुत सारे वैज्ञानिकों का हमने बयान सुना, वो सब यही बात को कह रहे हैं कि जो प्राचीन लोग थे, ऋषि मुनि थे, उनके पास ये बहुत ही उच्च स्तर का वैज्ञानिक ज्ञान था। Trillion years. After another Brahma century, he stirs, recomposes himself, and begins again to dream the great cosmic lotus dream. Here we behold a form of the superintelligent being Vishnu, reclining in mystic slumber amid the causal ocean. When he exhales, millions of universes issue from his body and expand, until he inhales when all the universes return within him. The universe is a sphere encased by successive coverings of the elements earth, water, fire, air, ether, intelligence, and ego. As a coconut has its hard outer shell and inner liquid, so the universe has its outer coverings and an inner space half filled with ocean water. On that ocean, another Vishnu expansion reclined on a serpent bed while being massaged by his consort Lakshmi. From his navel arose a lotus on which Brahma was born. Initially, the universe was pitch dark and Brahma engaged in meditation. Then he was empowered to create the universe. This account of creation may appear fantastic to some, but modern scientific theories also require fantastic leaps of faith to explain the origin of the universe. This is evident from the words of eminent physicist Stephen Hawking. Either we have failed to see 99% of the universe, or we are wrong about how the universe began. तो ये एक प्रसिद्ध नास्तिकवादी वैज्ञानिक है, वो अपना जो फेलियर है उसको एडमिट कर रहे हैं। इसने एक किताब लिखा है स्टीफन हॉकिंग के, व्हाई देयर इज नो गॉड।
तो भगवान पे ये विश्वास नहीं करता है। तो इसलिए वो अपना फेलियर को भी स्वीकार कर रहा है कि हमने 99% जो यूनिवर्स उसको हमने देखा नहीं है, या हम इसका जो सोर्स है इसके विषय में हम गलत हैं। तो ये अपने आप को गलत स्वीकार कर रहा है, अपना फेलियर को मान रहा है, किंतु वो भगवान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वैज्ञानिकों का जिद है, वो भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इसके कारण उनका जो भी थियोरी निकलते हैं वो हमेशा कोई ना कोई भूल, गलतियां जो है उससे भरी रहती है, कॉन्ट्रडिक्शन से भरा रहता है। तो मेन बात है, अगर हमको इस सृष्टि को भी समझना है तो भगवान का सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, और भगवान के कृपा से जो वैदिक ज्ञान है, फिर हम गुरु और भगवान की कृपा से ये वैदिक ज्ञान हमको प्राप्त होता है। भगवान को स्वीकार करना ये मेन क्वालिफिकेशन है ये इसको समझने के लिए। Vedic cosmology explains that the universe is made up of 14 vertically arranged planetary systems, or lokas. Each system resembles a galaxy and comprises stars, planets, and other celestial bodies. The topmost planetary system is Satyaloka, the abode of Brahma, which is at a height of 1.87 billion miles above Earth. Below this Satyaloka planetary system is the Tapaloka planetary system, the abode of the ascetics, which is at a height of nearly 1 billion miles above the Earth. Here the ascetics live in a solitary, serene environment conducive for yoga and meditation on transcendence. Their disciplined life of joyous austerity prepares them for returning back to the non-material world. As we move down from Tapaloka, we pass through Maharloka and Janaloka until we reach the Svargaloka planetary system, also known as heaven. The alignment of heavenly bodies around the pole star was elucidated by Srila Prabhupada in a letter. We can see that at night the whole planetary system is turning around. And the pole star being the pivot. Its planet has its orbit fixed, but the sun is moving up and down, is turning around. तो ये जो है वैदिक मॉडल है। यहाँ पे बाकी जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सब जो ध्रुव तारा है उसका परिक्रमा कर रहे हैं। ये और जो नीचे जो भूमंडल है वो स्थिर है। ये वैदिक मॉडल है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि सूर्य बीच में है और बाकी सब ग्रह घूम रहे हैं, वो फिक्स्ड है, वो चलता नहीं। किंतु भागवतम और इत्यादि अन्य वेदों शास्त्रों के अनुसार भूमंडल है ये स्थिर है, और उसके ऊपर जो भी तारे हैं, ग्रह है इत्यादि है, वो सब ये जो ध्रुव नक्षत्र है, ध्रुव का मतलब है जो स्थिर है, जो फिक्स्ड है। तो ध्रुव तारा जो है वो हिलता नहीं, बाकी सभी जो है उसका परिक्रमा करते हैं। ऊपर सप्तऋषि मंडल है, वो भी इन सबका परिक्रमा करते हैं, और इनको जोड़ा गया है ध्रुव तारा से। वो आप जो लाइन देख रहे हैं नीले रंग के, वो वायु के रस्सी है, वायु का रस्सी, वो दिखते नहीं है, और उनको प्रवाह वायु कहा गया है। ये प्रवाह वायु के द्वारा ये बंधे गए हैं सभी ग्रह ये ध्रुव तारा से। The pole star being the pivot. Its planet has its orbit fixed, but the sun is moving up and down, north and south. It is not that we shall accept the theory that the sun is fixed and others are all going around the sun. That is not correct. In talks with leading disciples, Srila Prabhupada compared the revolution of planets and stars to a spectacular rotating chandelier. It's like this chandelier, and so all the whole thing is moving. And then he developed this idea of the temple of the Vedic planetarium, and how he'd always go like this, dome, dome. He'd hold his hand like that, and he'd say,
and then from the center of the dome a chandelier, which shows the planets according to the Vedic version. Some spectacular kind of chandelier. This planetary system is ये जो मॉडल है इसको श्रील प्रभुपाद ने शैंडलियर मॉडल कहा। शैंडलियर मतलब आप झूमर कहते हैं हिंदी में, जो कोई हॉल में डोम में रखा जाता है, ऊपर से लटकता है। तो ये एक बड़ा, हम आकाश में रोज ये एक अद्भुत झूमर देख सकते हैं, शैंडलियर देख सकते हैं, जो ऐसे घूम रहा है। अब रात के आकाश में हम इसको देख सकते हैं। इसको शास्त्र में इसको शिशुमार कहा गया है। शिशुमार अभी नहीं मालूम, शिशुमार प्लैनेटरी सिस्टम। तो शिशुमार इंग्लिश में डॉल्फिन कहते हैं, एक तरह का मछली है, तो उससे तुलना किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो शिशुमार का वर्णन है। तो जो योगी लोग हैं, ये आकाश में जो तारा मंडल है उसको ये शिशुमार के रूप में इसका चिंतन करते हैं। और ये शिशुमार के ऊपर सभी जो पूरा जो जितने भी ग्रह तारे सब है, ये शिशुमार का आश्रय लेते हैं, और ये शिशुमार को भगवान का एक रूप माना गया है। which is hanging like the chandelier, taking shelter on the pole star, that we can see every night. That the pole star or the North Star remains fixed and does not orbit in the sky is well known to astronomers and sailors alike. Less known is the fact that the pole star rotates powerfully on its own axis. The ancient Vedic text called Matsya Purana explains, the planets and stars are all attached to the pole star by invisible astral cords of wind called pravaha. The revolution of the pole star causes the orbital motion of other planets and stars. Through meditation, yogic astronomers visualize the planets and stars as different parts of the body of Shishumar, the transcendental dolphin. तो मत्स्य पुराण के प्रमाण के आधार पे ये सिद्ध होता है, मतलब वहां प्रमाण है कि जो ध्रुव तारा है अपने ही स्थान में वो घूम रहा है। जैसे आजकल वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी अपने स्थान में घूम रहा है, किंतु वो शास्त्र स्वीकार नहीं करते हैं। पृथ्वी अपने स्थान में घूम नहीं रहा है, बल्कि जो ध्रुव तारा है वो अपने स्थान में घूम रहा है। और उससे जो जुड़े हुए जितने भी तारे हैं और जितने भी ग्रह हैं, वो सब उसके घूमने से वो सब घूम रहे हैं, अपने अपने कक्षा में घूम रहे हैं। ये वैदिक कॉन्सेप्ट है। Yogic astronomers visualize the planets and stars as different parts of the body of Shishumar, the transcendental dolphin. The pole star, the topmost of the heavenly planets, is like the capital of the middle universe. Here, the third form of Vishnu resides on an ocean of milk. In times of universal disturbances, the demigods headed by Brahma come here to appeal for help. The pole star is also the abode of Dhruva, a pure and exalted devotee of the Lord. Now let's look at the workings of our solar system. The mainstream scientific notion has been to portray the solar system as heliocentric or sun-centered. In the Vedic geocentric model, the sun, planets, and constellations revolve around the Earth in an approximately 24-hour period. What may surprise many is that a geocentric or Earth-centered model is also capable of explaining the cosmic phenomenon with equal, if not better, accuracy, as is confirmed by many eminent scientists. Either CS could be used with equal justification. The two sentences, the sun is at rest and the earth moves, or the sun moves and the earth is at rest, would simply mean two different conventions
concerning two different CS. We know that the difference between a heliocentric theory and a geocentric theory is one of relative motion only, and that such a difference has no physical significance. Obviously, it matters little if we think of the Earth as turning about on its axis, or if we view it at rest while the fixed stars revolve around it. Geometrically, these are exactly the same case of a relative rotation of the Earth and the fixed stars with respect to one another. Although the heliocentric model has been widely propagated, it has never been proven. There is no planetary observation by which we on Earth can prove that the Earth is moving in an orbit around the Sun. Mathematically, there is nothing wrong in this system because we are observing from the Earth and it is the relative motion that really matters. So if you assume that the Sun goes around the Earth, there is nothing wrong because it's a question of relative motion. The Vedas give amazing information about the Sun. Do you know what energy runs the Sun? Is it nuclear fusion? Is it volcanic energy? The Vedas say it is water. Yes, water. The Sun evaporates water from all over the creation and uses it as fuel, just as lightning uses moisture. Modern science knows that sunlight contains many types of rays, such as ultraviolet, infrared, gamma rays, X-rays, etc. The Vedas describe that sunlight contains 100,000 different types of rays, each possessing specific subtle properties. Just as in a house, electricity regulates coolness, heat, light, sound, etc., so the sun's rays control heat and cold, day and night, summer and winter, darkness and light throughout the universe. The Vedic geocentric model explains how the Sun moves around the pole star situated vertically above Earth's North Pole. As the Sun goes around the Earth globe, we experience the तो यहाँ पे जो जियोसेंट्रिक मॉडल है, वैदिक जियोसेंट्रिक मॉडल, उसका पुष्टि किया गया है। और जो साइंटिफिक, जो सो कॉल्ड साइंटिफिक हीलियोसेंट्रिक मॉडल, इसमें सूर्य को बीच में रखा, तो उसको जो है सभी वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसको ये अजम्पशन के ऊपर ये लोग चल रहा है, प्रैक्टिकल कोई प्रूफ नहीं है इसका कि पृथ्वी जो है सूर्य का जो है परिक्रमा कर रहा है। तो बिना प्रूफ के लोग सब प्रचार कर रहे हैं साइंस का। साइंस का मतलब है प्रूफ होना चाहिए, किंतु इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। किंतु प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर कर रहा है, ये प्रैक्टिकल है, और प्लस शास्त्र में भी इसका प्रमाण है। तो इसलिए जो वैदिक मॉडल है ये वास्तव में सही है। और आगे के जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम देखेंगे कि कैसे दिन और रात कैसे होता है, सीजन्स कैसे चेंज होता है, ये सब जो है ये वैदिक मॉडल में कैसा होता है, किस कारण से होता है इत्यादि हम देखेंगे। तो आज के प्रेजेंटेशन में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मोस्टली व्हाटएवर वाज बीन अनम्यूट करना पड़ेगा माता जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। कैन यू हियर नाउ? एम आई ऑडिबल? यस, नाउ यू आर ऑडिबल। यस या प्रभु जी, आज का जो अपन का था पूरा जो अपन ने देखा है अभी तक, तो आई हैव नोटेड दैट मेनी ऑफ द हॉलीवुड मूवीज व्हिच आई एम सीइंग विद माय चिल्ड्रन फ्रॉम लास्ट 10 years or 12 years is depicting the same thing like astral travel or multi universes
And children are just with the nomination that yes, we have superheroes, बल्कि potential बच्चों के अंदर भी होगा definitely वो वाला. But they are just in the story of that this is just a story. They're not finding it real factual, but everything the Hollywood movies are showing, even the recent movie of Tar 2 is having this whale concept. And why not? This has been in India, and why we are learning from foreign then? Everything is coming from Hollywood, then why not from India? Yeah, that is what we are also trying to tell people, that you have to take knowledge from the scripture, and all whatever these people are showing, it is already there in the scriptures. But the difference is that when you take from scripture, then you become a theistic person. You begin to have faith in God. You have get spiritual knowledge. You make advancement in spiritual life. The scientist may also say the same thing, but he doesn't have faith in God. He is not believer. He's atheist. So even if somehow he comes to the same conclusion, still there's no point in hearing from them. You must actually hear from the scriptures. And the sages like Vyasadeva and all, Shukdev Goswami and all our acharyas, how they have described, and they have given much more information than what these people are just speculating about so many things. But what Shastra is saying is based, I mean, it's reality, it's ultimate truth. And Prabhuji, many times I've read whatever I've read till yet, I've always noted ki, like for Narad Muni, when Narad Muni was very young, and so when he was finding in forest, and he was moving because the mother died, and then he took the payment. So everywhere in text they have written they have moved towards the north. They have used the north direction. So is this north direction is representing the pole star? Or no, it's on Earth planet. North actually, it's near to Meru. Meru is the north pole for us. Meru is where the devatas, the demigods, they are residing there. And there, the northern side is also the Himalayas. Himalayas is where the greater Himalayas. What we are seeing also, that is also to our north. But there is a greater Himalaya, which is the north of the whole earth. So that what we know as earth, which is Bharatvarsha only. So that greater Himalaya is also in the northern direction. And all yogis and those tapasvis, they go to north, means they mean the Himalayas. They go to the greater Himalayas for austerity, to perform austerity, to perform meditation. So we should not take it with the consideration of being North India, something like this, or North. Yeah, it's North India is like symptom of that, so like sample you can say, but the whole thing, the real place is the farther north. It's near the Arctic region. That's the real Himalaya starts from that Arctic region. That I had proved it previously also. Yeah. Thank you. So any other, कोई और प्रश्न है? Any other question? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से जो दिशा का निर्धारण है वो इस बेस पे होगा कि सूरज यहाँ से है या व्हाटएवर, या सुमेरु पर्वत को हमने माना है ऐसा कुछ? हाँ, जो नॉर्थन डायरेक्शन है, वो सुमेरु पर्वत जो है उसको नॉर्थ माना गया है, और वो अलाइंड है पोल स्टार से। आप देख सकते हैं पोल स्टार का जो एक्सिस है मेरु और पर्वत का, वो अलाइनमेंट में है। तो इसको नॉर्थ पोल, हाईएस्ट पोजीशन। नॉर्थ, दो तरह के नॉर्थ होते हैं, एक जियोग्राफिकल नॉर्थ और एक एस्ट्रोनॉमिकल नॉर्थ। तो एस्ट्रोनॉमिकल नॉर्थ ऊपर के डायरेक्शन को नॉर्थ कहा जाता है, तब वो पोल स्टार को माना जा सकता है। किंतु जब आप जियोग्राफिकल नॉर्थ कहते हैं तो फिर हाँ, हमारे लिए मेरू है, उससे आगे भी और उत्तर कुरु वर्ष है इत्यादि, वो सबसे उत्तर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी का। तो वो हमारा ज्योग्राफिकल लेवल पे वो नॉर्थ है। तो नॉर्मल जो ईस्टर्न डायरेक्शन से सनराइज होता है, और जो इंद्र का जो राजधानी है वो ईस्टर्न, एक्चुअली अष्ट दिक्पाल है वैदिक कॉन्सेप्ट। 8 डायरेक्शंस के लिए 8 देवता है। ईस्टर्न डायरेक्शन में इंद्र है, सदर्न डायरेक्शन में यमराज है, इस तरह से नॉर्दर्न डायरेक्शन में कुबेर है, वेस्टर्न डायरेक्शन में वरुण है। इस तरह से 8 दिक्पाल है।
तो हर एक डायरेक्शन का एक एक देवता है वैदिक कॉन्सेप्शन में। वो आएगा आगे, हम इसमें देखेंगे। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी इसमें भी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें बताया गया था कि जो सन है उसकी एनर्जी का जो फैक्टर है वो वाटर है। तो प्रभु जी वो न्यूक्लियर फिजन नहीं होके वाटर ही है ऐसा? हाँ, उसका एग्जाम्पल दिया था ना, लाइटनिंग का। लाइटनिंग आप देखते हैं वो वाटर से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो। और प्रैक्टिकली हम लोग जो यहाँ पे भी पृथ्वी पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होता है। वो पानी से वो टरबाइन चलाते हैं। तो यहाँ पे भी पानी से वो जो है पानी का एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो सूर्य देव जो है वो पानी को यहाँ पीते हैं। सब जगह से पानी को खींचते हैं और वही उनके लिए फ्यूल के रूप में कार्य करते हैं। तो एग्जैक्टली कौन सा श्लोक में बताया गया मुझे पता नहीं है, किंतु कहीं पे वो मूल वेदों में ये कहा गया है। उसका पता नहीं, महाराज से कभी पूछूंगा मैं कहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा श्लोक में बताया है, किंतु कहीं पे ये वेद में इसका वर्णन किया गया। तो और कोई प्रश्न है? प्रभु जी इस वीडियो का लिंक भेज देना प्लीज ग्रुप में। हाँ ठीक। तो अगले सत्र में हम देखेंगे कि दिन रात कैसे होता है और सीजन हरे कैसे। कृष्णा। हाँ प्रभु जी क्वेश्चन मेरा वही है फर्स्ट डे वाला। हाँ, आप म्यूट हो गए हैं, थोड़ा अनम्यूट करना पड़ेगा। तो ये जैसे आपने कहा था फर्स्ट डे भी कि एथिस्ट लोग नहीं मानते हैं इस चीज को, साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारे पास प्रूफ है। तो प्रभु जी जब हम लोग मायापुर टेम्पल में इस कॉस्मोलॉजी को जो जो बताया आपने, जैसे कि ये बताया जाएगा पूरा, इसका नॉलेज दिया जाएगा, तो प्रभु जी उस चीज का नॉलेज देने से भाई वो तो जो लोग हैं वो तो मॉडर्न एजुकेशन को ही मानते हैं, तो वो कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे लोग? नहीं, यही बात है ना, हम केयर नहीं करते हैं कि वो एक्सेप्ट करें या ना करें। हाँ, हमको जो सत्य है उसका हमको प्रचार करना है, सत्य को प्रेजेंट करना है। जो ओपन माइंडेड है, जो बुद्धिमान है, तो जो साइंस का लिमिटेशंस को समझते हैं उसको तो वो स्वीकार करेंगे। जो हायर अथॉरिटी को समझते हैं तो मानेंगे, मानते हैं तो थीस्ट होते हैं वो मान। क्या है, थीस्टिक वर्ल्ड में भी इतना डिटेल्ड नॉलेज कहीं पे नहीं दिया गया। चाहे आप आजकल के जो सो कॉल्ड रिलीजनिस्ट होते हैं उनको भी इतना डिटेल्ड साइंटिफिक नॉलेज इस ब्रह्मांड के विषय में नहीं है जितना भागवत इत्यादि में, या जो दूसरे स्क्रिप्चर्स है उतना इतना डिटेल्ड परफेक्ट नॉलेज कहीं नहीं दिया गया जितना भागवत में और अन्य शास्त्रों वैदिक शास्त्रों में दिया है। इसलिए उसको हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। बाकी जो नहीं मानते हैं, तो नहीं मानने वाले हमेशा रहेंगे। जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको भी सब लोग मानते हैं, ये बात नहीं। जो साइंटिस्ट को भी सब बहुत सारे लोग नहीं मानते। तो कोई भी वस्तु है संसार में सब लोग उसको स्वीकार नहीं करते। सर्वचित्ते नाही आराधिते चैतन्य महाप्रभु, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो हमको प्रयास करना है कि भगवान को, गुरु परंपरा को, जो वैदिक जो अथॉरिटीज हैं उनको संतुष्ट करना है। उनको उनका जो मत है उसको हमको प्रेजेंट करना है। थैंक यू प्रभु ठीक है, धन्यवाद। आप सबको बहुत सब मतलब पेशेंस के साथ आप सबने प्रेजेंटेशन को देखा और उसके ऊपर आप विचार कीजिए और उसको और हम समझाएंगे अगले सत्रों में।